बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अन्हु क़ाल ख़दमतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीन फमा क़ाल ली उफ़्फ़िन वला लिमा सनअत वला अल्ला सनअत। सय्यदुना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ही से मनक़ूल है कि मैंने खिदमत की हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 बरस तक। आपने मुझे कभी नहीं कहा उफ़, न कभी ऐसा कहा क्यों ऐसा किया, न कभी ऐसा कहा कि ऐसा क्यों नहीं किया। वअन्हु क़ाल ख़दमतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना इब्नु 8 सिनीन ख़दमतुहु 10 सिनीन फमा लामनी अला शैइन क़त्तु उतिय फ़ीहि अला यदैया फ़इन लामनी लाइमुन मिन अहलिही क़ाल दऊहु फ़इन्नहु लौ क़ुदिय शैउन कान। उन्हीं से मनक़ूल है कि मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। उस वक्त मैं 8 बरस का लड़का था और मैंने खिदमत की 10 बरस तक। आपने मेरी तरफ से कोई बात हो गई हो उस पर कभी भी मेरी मलामत नहीं की। अगर घर वालों में से कोई मुझ पर मलामत करता तो आप फरमाते छोड़ दो उसको, जो चीज़ तकदीर में लिखी हुई थी वो हो गई। वअन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अहसनिन नासि खुलुक़न फ़अरसलनी यौमन लिहाजतिन फ़क़ुल्तु वल्लाहि ला अज़हबु वफ़ी नफ़्सी अन अज़हब लिमा अमरनी बिही नबियुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख़रजतु हत्ता अमुर्र अला सिब्यानिन वहुम यलअबून फ़िस्सूक़ फ़इज़न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द क़बज़ बिक़फ़ाय मिन वराई क़ाल फ़नज़रतु इलैहि वहुव यज़हकु फ़क़ाल या अनस अज़हबत हैसु अमरतुक क़ाल क़ुल्तु नअम अना अज़हबु या रसूलल्लाह। रवाहु मुस्लिम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ही से मनक़ूल है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों में सबसे हसीन अखलाक वालों में से थे। एक रोज़ आपने मुझे किसी काम के लिए भेजा। मैंने कहा वल्लाह मैं नहीं जाऊँगा, और मेरे दिल में तो यही था कि मैं जाऊँगा, इसलिए कि हुज़ूर ने हुक्म दिया है। अब मैं निकला, मैं गुज़रा कुछ बच्चों से, वो बाज़ार में कुछ खेल खेल रहे थे, तो मैं भी उनको देखने में खड़ा हो गया। अचानक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पीछे से मेरी गुड्डी पकड़े हुए हैं और मुझे देख रहे हैं। फरमाया मैंने आपको देखा और आप मुस्कुरा रहे थे। आपने कहा अरे उनैस तू गया नहीं जहाँ मैंने हुक्म दिया था। मैं कभी जा रहा हूँ या रसूलुल्लाह, और चल दिया। ये हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायात हैं जिसमें हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज मुबारक की नरमी और जेंटलनेस बयान हो रहा है। पहली रिवायत में फरमाया 10 बरस खिदमत की, कभी उफ़ नहीं कहा, न कभी ऐसा कहा कैसे क्यों किया, न कभी ऐसा कहा कैसे क्यों नहीं किया। ये जो न डांटना है ये उन उमूर से मुताल्लिक़ है जो खिदमत से कनेक्टेड है। आपकी पर्सनल ज़ाती मामलात में अगर मुझसे कोई गड़बड़ सरबड़ भूल चूक हो गई कभी नहीं डांटा। हाँ, दीनी मामलात में अल्लाह का कोई हुक्म टूटता हो वहाँ तो हुजूर बहुत गर्म हो जाते थे। वहाँ कोई आपके गुस्से की ताप नहीं ला सकता था। अल्लाह का, अरे अल्लाह का हुक्म तोड़ रहे हो, अल्लाह के हुक्म के बारे में तो सवाल पैदा नहीं होता। वहाँ बहुत गुस्सा हो जाते थे, फिर कोई गुस्से की ताप नहीं ला सकता था। लेकिन पर्सनल चीज़ है, हो गया है क्या इसमें। ज़ाती मामलात में कभी आप इंतकाम रिवेंज लेने के आदी नहीं थे, गुस्सा नहीं फरमाते थे, नरमी से पेश आते थे। हमारे अकाबिर भी ऐसे थे। हज़रत शेख नव्वरल्लाहु मरक़दहू इस्लाह नफ्स के लिए तो मुरीदीन पर बहुत गुस्सा हो जाते थे, डांटते भी थे ज़ोर से, लेकिन ज़ाती मामलात में बहुत नरम। हमारे हज़रत नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने सुनाया, एक मरतबा मदीना शरीफ में हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह को कहीं ले जा रहे थे। आपको गाड़ी में बिठाया, अभी आप सीधे बैठे नहीं थे, अभी वो पकड़ रहे थे कि किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। तो हज़रत का अंगूठा जो है वो दरवाजे में आ गया। आपने आवाज़ लगा रहे तो दरवाज़ा खोला, बस फिर
हजरत ने पूछा भी नहीं कि ये कौन अहमक बेवकूफ़ था जिसने इतनी दूर से दरवाज़ा बंद कर दिया, हालांकि पूरा अंगूठा काला काला हो गया था। बहुत तकलीफ हुई थी, मगर ज़ाती मामला था उसमें बिल्कुल डांट डपट नहीं। तो अल्लाह वाले अपने पर्सनल मामले में तो डांट डपट नहीं करते थे, हाँ दीनी मामला हो, इस्लाह हो, वहाँ गुस्सा करते थे। तो दोनों का लिहाज होना चाहिए। यहाँ हज़रत अनस चूँकि खादिम थे, तो खादिम से उल्टी पुल्टी चीज़ें हरकतें हो जाती हैं, तो कहते हैं कि कभी भी हुजूर ने मुझे डांटा नहीं, कभी ऐसा नहीं कहा व्हाई डिड यू डू दिस, न कभी ऐसा कहा व्हाई डिड यू नॉट डू दिस। इसी तरह दूसरी रिवायत में है कि मैं हुजूर की खिदमत में आया, मैं 8 साल का था, उनकी अम्मी थी उम्मे सुलैम और इनके अब्बा का इंतकाल हो गया था। तो अनस इब्न मालिक इब्न नज़र, तो मालिक इब्न नज़र का इंतकाल हो गया था। तो इनकी अम्मी जो हैं इस यतीम बच्चे को हुजूर के पास लेकर आई, और हुजूर का रिश्ता था, इनसे कनेक्टेड था, बनु नज्जार से थी उम्मे सुलैम। तो उन्होंने कहा हुजूर ये मेरा अनस है ना, ये 10 बरस का है लेकिन है बड़ा होशियार, काम बहुत अच्छी तरह करता है, इसको आप अपनी खिदमत के लिए कबूल फरमा लें। हुजूर ने फरमाया बहुत अच्छा, वैसे भी ज़रूरत पड़ती है बड़ी उम्र में, छोटे बच्चे हों तो ज़रा दौड़ के पानी ले आओ, ये काम करो वो काम करो, फलां को बुला करके ले आओ, तो सब काम काज बच्चे जल्दी जल्दी दौड़ करके, होशियार बच्चे हों सही काम करते हैं। बावला बहुत इंसान हो तो उल्टा पुल्टा काम करता है। गुलाम रसूल बोरसदी साहब रहमतुल्लाह अलैह का खादिम था, हर काम उल्टा करे, मगर वो खादिम था। एक मरतबा हजरत ने उसको किसी काम के लिए भेजा, वो उल्टा पुल्टा कुछ कर गया, वो कुरान शरीफ में कहा है, अल्लाह ने एक मिसाल बयान की है, एक गुलाम जो अपने मालिक पर बोझ बना हुआ है, जहाँ भेजते हैं उल्टा ही काम करके आता है। तो इसको भी हुजूर हजरत मौलाना गुलाम रसूल साहब फरमाने लगे, तो ऐसे उल्टे पुल्टे भी होते हैं, लेकिन हजरत अनस बड़े होशियार थे, सब काम सही करते थे। हुजूर ने खिदमत के लिए कबूल किया, 10 बरस खिदमत की, कभी किसी हरकत पर मलामत नहीं की। घर वालों में से कोई मलामत करता, अरे क्या कर दिया तुमने, तो हुजूर उनको कहते दाऊ हो, छोड़ दो बेचारा बच्चा है, अब जो तकदीर में लिखा हुआ था हो गया। तकदीर में लिखी, मसलन प्याला टूट गया, किसी ने डांटा, चलो तकदीर में प्याला टूटना लिखा हुआ था, बच्चा है टूट गया, छोड़ो इसको। तो ये है। आगे तीसरी रिवायत में हजरत अनस कहते हैं हुजूर सबसे हसीन अखलाक वाले थे। एक दिन किसी काम के लिए कहा, मैं नहीं जाऊँगा, बच्चे बाज मरतबा मूड में नहीं होते हैं, मूडी होते हैं, मैं अभी नहीं जाऊँगा, मेरे दिल में तो ये था कि जाऊँगा, क्योंकि हुजूर ने जो कहा है। फिर मैं निकला भी उस काम के लिए, लेकिन बाजार में कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो मैं खड़ा खड़ा उनका खेल देखने लग गया। बच्चों को तो खेल का शौक़ होता है, छोटे बच्चे हैं, 10-11 बरस के हैं, तो वो बेचारे खेल देखने में मस्त हो गए और देखने में मशगूल हो गए। बच्चे खेलते हैं, शौक़ होता है। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का मैंने सुनाया था, हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह 14 साल के थे और मुफ्ती बन गए थे, और मक्के मुकर्रमा में बैठ के फतवा देते थे मस्जिद हराम में, और बड़ी बड़ी उम्र वाले सामने बैठ के दर्स पढ़ते थे। एक मरतबा हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह दर्स दे रहे थे कि एक परिंदा जो है वो उड़ करके आके आपके पास बैठ के चलने लगे इधर उधर, तो इमाम शाफ़ी ने मौका पाके यूँ करके अपनी टोपी उठाई और उस पर डाल दी। अब वो परिंदा टोपी में फंस गया, अब जो उसके साथ खेलने लगे। तो किसी ने कहा असबीयु सबियुन व इन कान इब्न नबिय्यिन, बच्चा बच्चा होता है भले नबी का बच्चा हो। शाफी बच्चा ही है, अभी सबक पढ़ाते पढ़ाते खेलने लगा परिंदे से। तो बच्चे हैं, उनको खेल का शौक होता है। हजरत अनस भी खेल देखने में मस्त हो गए। इतने में अचानक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आए और गुड्डी पकड़ी बच्चे की, अनस वो काम किया कि नहीं, और मैंने देखा तो हुजूर मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराते हुए फरमाया वो काम किया कि नहीं, गई कि नहीं, अरे अभी जा रहा हूँ हुजूर, अभी जा रहा हूँ, ये कह के दौड़े और वो काम करके आ गए। ये हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु है, आगे बाद में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह में हमारे नबी की सुन्नत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए, उनके जैसी नरम तबीयत हमको अता फरमाए। खिदमत के मामलात में इधर उधर गुस्सा करने से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाह व अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। और बिलाल साहब आप जिक्र करा दो।
Wixler ko yani Facebook list. Okay, jawab dulu, aku jawab belakang. Assalamualaikum. चलो भाई बत्ती जलाओ दूसरी बत्ती भी जलाओ जाओ उधर से टिपाई ले आओ जगह करो अपनी अपनी बैठ जाओ जहाँ कुर्सी मिले जहाँ जगह मिले रजिस्टर पहले ले लो कौन हाजिर है कौन गायब है भाई इधर मेरे सामने आके बैठ जाओ if you want oh भाई if you want get some chairs and sit here on chairs ओ माइक बंद कर दो पीछे से But if you want to get chairs and sit on chairs over here. Are you sure? भाई बेटे ये चेयर है ना उसको उधर पुश कर दो ताकि आपको नजर आए सब बस एकदम आखिरी में किसी को बैठना हो तो उस पर बैठने दो इधर से आ जाओ सामने आ जाओ इधर आ जाओ कम हियर टिपाई ले लो यूनुस इधर आ जाओ आगे बैठ जाओ भाई उधर किसी की सीट है कौन आने वाला है हाँ जी ओ भाई मिशकात वालों में कुछ गायब नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मिसाल क्यों से मरता 10 खैरियत नो प्रॉब्लम भाई 3 गायब्स कौन गायब है कौन 3 नहीं है तुम्हारी क्लास में है उमर और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 There's 10 and you're 13 total ना तो कौन नहीं है तुम्हारी क्लास तो फुल है तुम्हारे क्लास में अच्छा तुम्हारे साथ 11 हो सॉरी मैंने तुमको काउंट नहीं किया था 11 तो there's 2 गायब उमर और अच्छा वो तो छोड़ गया तो तुम्हारे 12 बच्चे हो गए सो देयर वन गायब तुम्हारे क्लास में से कितने गायब हैं 1 2 3 4 5 कौन कौन नहीं है उमर अरवान और ऑनलाइन पे है वहाँ आवाज़ जाएगी फोन इधर रख दो करीब रख दो फोन जी चलो पढ़ो कहाँ से है सबक हाँ बाबू फदाइल सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि चल रही पढ़ो हदीस कौन पढ़ेगा قال أجل إنها صلاة ركعة وركعة وإني سألت الله فيها ثلاثا فأعطاني اثنتين ومعني واحدة سألته أن لا يحرك أمتي بسنة فأعطانيها وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطاني وسألته أن لا يذيق بعضهم بعضا ومنعنيها बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद we are reading Mishkat page 512 what is the hadith number 5753 फस्लुल सानी खब्बाब बिन अरत रदियल्लाहु अन्हु reports Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam led us in one salat did the imamat of us and he lengthened that salat. They said, Ya Rasulullah, you performed a salat
which you don't normally perform, meaning such long? And he replied, yes, it is a salat of shawq and khawf. Raghbat, desire, rahbat, fear. Shawq and khawf, desire and fear. And indeed, I asked Allah in it for three things. He gave me two and refused me one. I asked him to not destroy my ummah by qahat and famine. So he gave me this. And I asked him not to impose and appoint over them an enemy besides them. So he gave me this. And I asked him not to let some of them taste the grip and power of others. And he refused me this. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, yani he did our imamat. فأطالها, very long namaz. Now he wouldn't normally pray long namaz. He would think about everyone else, that what will happen to them if I do long namaz. It was Hazrat Anas radiallahu anhu said, Jazakallah wa shukran. Shukriya. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمامين. He was the lightest in namaz, but complete namaz. He would do ruku, sijda, qawma, jalsa properly. So this was not his norm. So they asked, Ya Rasulullah, why do you pray such long salat? And he said, this salat was for some shawq and for some khawf. I had some khawf as well, some shawq as well, desire as well, and fear as well. And then he mentioned the reason. I asked three things, two were given, one was refused. I asked Allah not to destroy my ummah bi sanatin ammatin. Sanatun literally means qahat, drought, famine. In Lughat, sanatun is used for a year. Now there are two words to describe 1 year, amun and sanatun. Amun means 1 year, sanatun also means 1 year. However, amun is normally used for a year in which there is lots of rain, lots of produce, and shadabi and greenery, and fruits and flowers. But sanatun is used for that year in which there is qahat, drought, famine, khushki, not enough rain, not enough crops. So sanatun means here qahat. So do not destroy my ummah by qahat and drought and famine, that they all die of hunger and nobody remains. So protect my ummah from this. So he said, okay, I've given you this. Another was that enemy from outside should not overpower my ummah and finish them off. Right? So ghair, other kuffar, mushrikeen, Yahud, Nasara, enemies of Islam, they should not have so much power over my ummah that they finish off my ummah and my ummah is totally annihilated. So protect my ummah from this annihilation. And he said, okay, I have protected them. The dushmans and the enemies will not be able to annihilate your ummah. And I asked for a third thing, Allah yudhiqa ba'dahum ba'sa ba'din, that some of them should not be made to taste. Okay, the adaq yudhiqu izaqatan chakana. ذاق यज़ूक़ु ज़ौक़न चखना. तो बाज को बाज की पकड़, गिरफ्त, power and seizure न दे. Meaning they should not have infightings and civil wars. But Allah said, no, sorry, I can't give you that. That's going to happen. It will happen because people have different minds, different mentalities, different, motives. So based on their different mentalities and motives, they will fight among themselves. So there is no escape from that. So I'm sorry, that could not happen. चलिए आगे बाद में पढ़ना, पहले चाय पी लो अपने. भाई एक कुर्सी खाली है, किसी को बैठना हो तो बैठ जाओ. जाओ तुम अपनी कुर्सी पे जाओ. यूनुस तुमको कुर्सी पे बैठना हो बैठ जाओ. एक कुर्सी उधर खाली है. बिस्मिल्लाह. जा, तेरी कुर्सी है, तू बैठ जा. बिस्मिल्लाह.
आज बहुत छोटे कप में चाय आई है, ये इंडियन कप है। इंडिया में होटल में ऐसे छोटे कप होते हैं। चलो जी पढ़ो। أيضا بالمرء الشرير والمقال قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل هداكم من ثلاث كلام ألا يدعو عليكم نبيكم فتحركوا جميعا ولا يدخل أهل الباطل على أهل الحق وألا تجتمعوا على ضلالة أخرى. Allah has given you protection from three things. Your Nabi will not make but dua on you that you may all be destroyed together altogether. And Ahle Batil will not gain dominance over Ahle Haq. And that you will not collaborate on error and misguidance. But alfaz are clear. Do you understand all the words? With previous prophets, they did make dua on their qawm, but that was because there was no other way out. When Nuh alayhi salam was told, إِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Then he said, رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. So other prophets made dua, but Rasul said, I'm never going to make dua over you so that you be destroyed. And Ahle Batil will not gain dominance over Ahle Haq. But meaning total dominance in order to annihilate them and wipe them out from the face of the earth. And history has proven this. Nobody has been able to wipe out the Muslim Ummah, though many attempts were made. And another third thing is that you will not collaborate on error. Meaning, this hadith is proof that ijma'i ummat is hujjat. When the whole ummah agrees on something, then that is also a hujjat shar'iyya, because the ummah is protected from collaborating and getting together and forming a consensus on something wrong. They will not get together on some error. Some people might err, but others will uphold the truth. And that's always been the case. People have tried to create misguidance and lead the ummah astray, but there's always been ulama haq who protected the haq, who stood up for the haq, and who said that this is wrong and this cannot be right. And even today, there are ulama haq around the world. Whenever batil comes, ulama haq stand up and defend the haq. So the whole ummah will not collaborate on dalalat and gumrahi. If someone goes astray, there will be others who will remain on the straight path and protect the haq. चलिए आगे. أعوذ بملك قال قال صلى الله عليه وسلم يجمع الله على هذه الأمة سيفين سيف منها سيف من أبوها. Allah will never gather on this ummah two swords, one sword of itself and another sword of its enemy. By sword, it means weapons, attacks. It will not happen that in both ways, because if both ways happen, then the ummah will be totally destroyed. So, if the enemy's weapons are going to attack the ummah, this will happen. But they will not be able to finish ummah off. However, the sword from among themselves is going to remain. Meaning infighting, civil wars, they will keep happening. But Allah will not let the enemies destroy this ummah with their weapons. Both things, if both things gather, then the whole ummah will be finished. So if they fight among themselves, that will happen. But enemies coming from outside and destroying them, that's not going to happen. It's like in Ghazwi Ahzab, how many enemies came? 10,000. But Allah subhanahu wa ta'ala protected Medina Sharif through Khandaq. They made the Khandaq and the enemies were stopped. So Allah will make way for protection of the Ummah. He will not let the enemies annihilate the Ummah.
चलिए. فإن الرسول يرون أنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه سمع خيرا. These were some khususiyat. Now some other fazail of Nabi sallallahu alaihi wasallam are mentioned here. Ji. فقال من أنا؟ فقالوا أنت رسول الله. فقال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. Abbas came to Nabi sallallahu alayhi wasallam as though he had heard something from some people. So Nabi sallallahu alayhi wasallam stood up on mimbar and he said, "Who am I?" And they said, "You are Rasulullah." And he said, "I am Muhammad, son of Abdullah, son of Abdul Muttalib. Indeed, Allah created the creation and He placed me in the best of them, meaning insan. And then He created insan to two firqas, Arab and Ajam. So He placed me among the best of them in group, and they are the Arab. And then He made them qabilas and tribes, and He put me in the best qabila, which are Quraysh. And then He made them into households, and He put me in the best house, meaning Banu Hashim. So I am the best among them in Zat, and best among them in household. Again, Ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, meaning he was a little bit annoyed. He seemed annoyed. فَكَأَنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا, as though he heard something. Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam heard something of the reason of the annoyance and anger of Abbas. Meaning somebody had criticized the nasab of Abbas and said something bad about Abbas. Now who is Abbas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke chacha, uncle. So Huzur felt it. But why did someone criticize my uncle? Right? In another hadith, Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam said, "Innama ammur rajuli sinu abihi." Indeed, the uncle of a person is the other branch of his brother, because they are both from the same tree. Right? There are 2-3 branches on tree. So one father has 10 sons. So they are all from one tree, different branch. So my uncle is he is the other branch of my father. How could you criticize my uncle? And for that he got angry and he stood up on mimbar and he said to people, "Who am I?" And they said, "You are Rasulullah." And he said, "I am Muhammad, son of Abdullah, son of Abdul Muttalib." And then he mentioned that. And we've read this hadith before as well. I explained it there. Chaliye. So this is not racism. This is explaining the reality when needed. Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam had to say it, because otherwise people would keep doing what they were doing. They would not stop. So he had to mention the fadilat of his household, that Abbas is from Banu Hashim, and Allah made us the best of households. Do you get it? Huzur worked his way down from top, right? Allah created creation, and He put them into two, Jinnat and Insan. So He put Huzur in the Insan side, and then Insan He created two, Arab, Ajam, and He put him in the best of them, which are Arab. And Arab He made them tribes, many tribes, and He put Huzur in the best tribe, who are the Quraysh. And Quraysh He made different households, Buyut. Buyut is plural of Bayt. Bayt means house. So households, families, and He put him in the best family from Quraysh. From Quraysh, there are Banu Adi, Banu Taym, and others. But Banu Hashim are the best households. So Allah put Huzur in the best household. So best household in Makkah was the household of Banu Hashim, the family of Rasul Kareem, the clan of Rasul Kareem sallallahu alayhi wasallam. So he said, "Don't criticize my family. Why are you criticizing my uncle?" So he had to say it, and for reasons, otherwise people would not recognize him. So sometimes, if you mention some fazilat or virtue of this, then it should not be taken as racism or tarafdari. Sometimes some others say, then it won't be bad. But if we say it, people feel bad.
मौलाना तारिक जमील साहब said, ये गुजराती जो हैं ये बड़े अच्छे हैं, जहाँ जाते हैं मस्जिद मदरसा की फ़िक्र करते हैं. कारी तैयब साहब also said it. If we were to say it, people would say that these Gujis are racist. So we don't say it. But others say that no, Alhamdulillah, Allah gave them the tawfiq that in the whole world, wherever they went, the first fikr they do is of masjid, madrasa, teaching our kids. How can we protect the iman of our kids? So Alhamdulillah, to a great extent we protected our children, our people, and other people as well. So there's no harm in there. This is tawfiq from Allah subhanahu wa ta'ala. If you mention this, it's not racism. Sometimes you have to say it. What is reality is reality. Chaliye. Ya Rasulullah, when did Nabuwat become wajib for you? And he said, whilst Adam was between soul and body. Mata wajabat lakan nubuwatu. Wajabat here means thabatat. When was your Nabuwat proven and finalized and set and given to you? And he said, wa Adamu. Wow is haliya. Wal halu anna Adam bayna ruhi wal jasadi. Ruh, soul, jasad, body. Meaning, Allah had just created the mold of Adam alayhi salam, his body frame. Allah had not let the soul come inside yet. Even at that time, right before the completion of the creation of Adam, Huzur's Nabuwat was decided, set. So, Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam's Nabuwat is since then. He is Nabi. His Nabuwat became apparent to the world when he was 40 years old, when in Ghar Hira the Wahi was sent to him. But his Nabuwat was set before the Nabuwat of other prophets, because Allah decided to whom to give Nabuwat to, Wilayat to, and all these decisions Allah made in Azal. When Allah made the whole creation, finalized, Lawh Mahfuz, everything was written. So at that time, Huzur's Nabuwat was established and set and decided for him. Chaliye. وأستغفركم بأول الأمر دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا التي رأتنا ودعتني وقد خرج لها نور أضاء لها منه قصور الشام. Irbad ibn Sariya radiallahu anhu reports from Rasool Kareem sallallahu alayhi wasallam, who said, indeed, I am noted with Allah as Khatamun Nabiyyin. Even when Adam was still left on the earth in his soil. And I will inform you about the beginning of my affair. I am the dua of Ibrahim and the basharat of Isa and the dream of my mother, which she saw when she delivered me, when a nur emanated from her, due to which the palaces of Sham lit up before her. Again, إني لمكتوب عند الله خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته. خاتم النبيين, seal of the prophets, the last and final prophets. Hazrat Maulana Qasim Nanotwi Rahmatullah Alayhi said, Khatamun Nabiyyin has two meanings. Number one, it means the last and final prophet, and number two, it means the best of the prophets. So Khatam has both meanings, last and the best. Sometimes people just take one meaning and don't consider the other one. And this is like when people say Qari Abdul Basit is Khatamul Qurra, Khatimatul Qurra. It means he's the best of Qaris, and nobody can beat Qari Abdul Basit in his Qur'an. So, Khatimatun and Khatam is used for best as well. So, Khatamun Nabiyyin means last of the prophets and best of the prophets. Both meanings included in there. And I was written down as Khatamun Nabiyyin whilst Adam was still thrown in his soil. In Jadala means to pin down. There's a wrestling man.
एक अपोनेंट दूसरे को पिन डाउन कर देता है बॉक्सिंग में, उसको कहते हैं जदला, गिरा दिया, पछाड़ दिया, and put him down, pinned him down. So in jadala is from babi infial, and in jadala means to be flung and to be thrown. So he was flung in his soil. When he was still in his soil, he had not come to life yet. And तीनतुन means मिट्टी, अभी मिट्टी में पड़े हुए थे, फेंके हुए थे, अभी रूह उतरी नहीं थी, अभी कंप्लीट नहीं हुई था उनका क्रिएशन. और उस वक्त अल्लाह ने मुझको लिख दिया था खातमुन नबीयीन. और मैं तुमको बताता हूँ मेरा इब्तिदाई मामला, हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड. दावतु अबी इब्राहिम, आई एम द दुआ ऑफ माई फादर इब्राहिम, एंड बशारत of Isa alayhi salam. Dua of Ibrahim, which dua? When he made Kaaba Sharif. पहले सिपारे में 15वें रुकू में क्या दुआ है? रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम. Who is this Rasool for whom Ibrahim alayhi salam is making dua? Rasool Kareem sallallahu alayhi wasallam. So in Makkah Mukarramah, after Ibrahim and Ismail alayhi salam, the only prophet that came there was Hazrat Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. In the descendants of Ishaq alayhi salam, all the Anbiya Bani Israel came. Musa alayhi salam, Sulaiman alayhi salam, Dawood alayhi salam, Isa alayhi salam. But in the descendants of Ismail, only one prophet. That means this dua of Ibrahim was for Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Basharat Isa, Basharat means good news. Basharat, Bisharat, Bifathil Ba, Bikasril Ba, both correct. And good news is in Surah As-Saf, 28 Sibara. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أحمد. وَيَدِي तो وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أحمد. Now you might say भाई अहमद नाम है, वहाँ मोहम्मद नहीं है, तो कहेंगे क्या हुजूर के दोनों नाम है, मोहम्मद भी और अहमद भी. ओके, आपकी माँ ने आपका नाम अहमद रखा था और दादा ने आपका नाम मोहम्मद रखा था. So both names, and is mentioned with Ahmad once and with Muhammad 4 times in Quran. So the basharat of Isa alayhi salam and the dream of my mother which she saw hina wada'atni. Wada'a means to place. Over here placing means delivery. When she delivered me, she saw a dream. She saw a dream at the time of delivery. Before or after she delivered me, she swooned off, dozed off, and she saw this dream. What was the dream? That some noor came out of her. And for that noor, the palaces of Sham were lit up. Okay, जी? अضاء अضاء يضيء إضاءة means रोशन हो जाना. कुल्लमा अضاءت لهم مشوا فيه. तो रोशन हो गया, लाइट अप हो गया. कसूर शाम, कसूर प्लूरल ऑफ कसरुन, and कसरुन means महल, palace. Meaning, she was told, shown that these palaces will fall under the control of this child whom you have delivered. And Hazrat Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam's ummah got there, and the Byzantine Empire was removed, and all the Sham came under the control of Ummat Muhammadiyya. And it is under now until these recent events are happening, and there is every attempt made to erase Islam from that area. May Allah protect our Muslim brothers and sisters wherever they are in the area of Sham. And you know what Sham is? Sham is that whole Levant area, which includes Palestine, Jordan, Lebanon, Syria. It's all called Sham, that whole area. Not just Syria, the whole area is called Sham. And in the time of Hazrat Umar radiallahu anhu, in fact in the time of Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu, Sham was conquered. Because Ikrimah ibn Abi Jahl, Khalid bin Walid, they all got to above Tabuk and Sham area. And then the Byzantine Empire fell. It was pushed away during the time of Hazrat Umar radiallahu anhu. And Hazrat Muawiyah radiallahu anhu took the Darul Khilafah to Dimashq. And Damascus remained the capital city of the whole Muslim world for nearly 100 years. So that whole Sham area,
which fell, it was shown to Hazrat Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam's mother at the time of his birth. That whole mahallat and palaces of Sham were lit up before her in that dream. चलिए आगे. والذي قيل له لما قال قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم ومن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر जी अबू सईद खुदरी radiallahu anhu says, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, I am the leader of the children of Adam on the day of judgment. And this is not to boast. In my hand will be the banner of hamd and praise, and this is not to boast. And there is no Nabi, Adam or those after him, but on that day they will all be under my banner. And I am the first whose earth will split open, and this is not to boast. Allahu Akbar. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرا. Wuld is plural of walad, and Sayyid is from Sada Yasudu Siyadatan, which means to lead people. Siyadat means to lead. Sayyid, leader. I am the leader of the children of Adam on the day of Qiyamah. He will be the leader. Now, Huzur Akram Sallallahu Alaihi Wasallam is leader in this world as well. But in this world, many people do not accept his leadership, do not take him as their leader. But on the day of Qiyamah, his leadership will be evident and clear and apparent for everyone to see. The whole world and creation will see his leadership. He will be the leader of all of them on the day of Qiyamah, and his leadership will be pretty clear before them. So, I will be the leader of the children of Adam on the day of Qiyamah, and this is not to boast. Why did he say wala fakhra? Fakhr means to boast. Fakhr karna, badai bagarna. So I'm not saying this because I like boasting. I'm saying this because Allah has ordered me to say it, and I have to tell people what the reality is. Where did Allah say this? In the last ayah of Wadduha. What did Allah say? وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Fahaddis means tell people of the ni'mats which your Rabb has given you. So he had to tell people who he is and what his reality is. So I'm not saying this to boast, but I have to say it because Allah told me, and Allah said, Ya ayyuha Rasool, balligh ma unzila ilayka. And this is also part of tabligh, to tell people. Once I went to Saharanpur, and Sheikh Yunus Saab's dars, I sat in Sheikh Saab's dars. And Sheikh Saab mentioned this, and then he said, Hafiz ibn Hajar rahmatullah ने लिखा है कि एक आलिम को भी कभी कभी अपने फ़ज़ाइल बयान करने चाहिए ताकि शागिर्दों को पता चले कि वो कौन है, वरना लोगों को पता कैसे चलेगा कि उनका मकाम क्या है. Sheikh Saab said this because based on this, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, Huzur was told. So हमें भी कभी कभी, तो अगर कभी किसी आलिम की ज़बान से कोई ऐसी बात निकल गई जिसमें सेल्फ प्रेज हो, so it's not to boast, but it's just to tell people of the reality of who he is. Otherwise, people won't understand. वरना फिर people कदर नहीं करते, फिर करते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. अपने आलिम की कदर करनी चाहिए, अपने उस्ताद की कदर करनी चाहिए. काजी अबू यूसुफ ने कहा है, मन ला यारिफु लि उस्ताज़ी ला युफ्लिहु. जो अपने उस्ताद का मकाम न समझे वो कामयाब नहीं होता. Whoever doesn't understand the maqam of his ustad cannot be successful. Anyway, so I'm not saying this to boast. I don't like boasting, but because of the matter of tabligh and the need, I have to say it. بِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرٍ. In my hand will be the banner and the flag of hamd, and this is no boasting. The flag of hamd will be with me. Huzur will be carrying that flag. There will be only one flag in the day of Qiyamah, the flag of Allah's praise, and he will be carrying that flag. And ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. All the prophets, Adam, Noah, Ibrahim, Musa, Isa, Sulaiman, Dawood, ala nabiyina wa alayhimu salatu wassalam, they will all, 124,000 prophets will be all under that banner, and they will be looking up to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. He will be ahead of them, and all of them will be behind. And it is he
who will request for the Shafaati Kubra, and he will go in sajda, and he will praise Allah and hamd of Allah with so beautiful words that nobody's praised Allah in that manner, then Allah's ghussa and anger will subside and come down, calm down, and then Allah will start his kitab. That anger is also needed to keep in control Firaun and Haman and Namrud, to show those khabisas and fara'ina and zalims the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala. But Huzur will request for Allah subhanahu wa ta'ala to be gentle and kind and nice to the people and start Hisab Kitab, and that will happen with the banner of Hamd in his hand. And then وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ, I am the first whose earth will split open and the first to come out of the qabr. चलिए आगे. Ibn Abbas جلس ناس من أصحاب رسول الله فخرج صلى الله عليه وسلم. سمعهم يتذاكرون قال بعضهم إن الله اتخذ إبراهيم خليلا قال آخر موسى كلمه تكليما قال آخر فعيسى كلمة الله وروحه وقال آخر آدم اصطفاه الله فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسمعت كلامهم وعجبكم وأن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى نبي الله وهو كذلك وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك وآدم اصطفاه الله وهو كذلك ألا وأنا حبيب الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله فيدخلونها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر وأنا أكرم الأولين والآخرين والله ولا فخر. Subhanallah. Ibn Abbas says, some Sahaba Ridwanullah Ali Majma'i sat in one city majlis, and Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam came upon them. Hatta idha dana minhum, until when he was close to them, sami'ahum yatazakarun, he heard them talking among themselves. Dana yadnu dunuban, मैं जल्दी कर देता हूँ, लंबी हदीस है तो एक एक वर्ड जल्दी कर देते हैं. Dana yadnu dunuban, to come close. When he was close to them, he heard them yatazakaruna, muzakara कर रहे थे, बातें कर रहे थे. They were busy in some sort of discussion. قال بعضهم, some had said, إن الله اتخذ إبراهيم خليلا, Allah took Ibrahim as his deep friend. Khalil means deep, close friend, whose friendship and love and muhabbat penetrates deep into the heart, is Khalil. Others said Allah took Musa. Musa is such that Allah spoke to him directly. Another said, Bas Isa is Kalimatullah and Ruhullah, a word of Allah created by Kun, and Ruhullah meaning special Ruh from Allah. Another said Adam was Safiyullah, Allah chose him. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came upon them and he said, وَقَدْ سَمِعْتُ كَلَامَكُمْ وَعَجَبَكُمْ, I have heard your conversation and your surprise. Ajab means surprise, how you were surprised. Indeed, Ibrahim is Khalilullah and he is like that. Musa is Najiyullah and he is like that. Najiyun is from Najwa, and Najwa is from Munajat. Munajat means intimacy, to talk with someone secretly in private. Right? Now, if your Ustad and Sheikh was to tell everyone to go and call one person close and sit with him and have intimacy with him, talk to him or listen to him address his concerns, so that person will be really chuffed, right? So that person is called Najiyun, one with whom private conversation, secret talk is made. So Musa alayhi salam is Najiyullah. Allah talked to him directly. He is like that. Isa is Ruhullah, Kalimatullah. He is like that. Adam, Allah selected him. He is like that. Allah, listen carefully. وَأَنَا Habibullah وَلَا فَخْرَ, I am the Mahbub of Allah, and this is not to boast. Okay? Habibullah. A discussion comes over here. Who is better, Khalil or Habib? Our Hazrat Sheikh Yunus Sahab mentioned two calls in there. First call is that Habib is better and more closer than Khalil, because Khalil is one whose love
has gone deep into the heart. But the Habib is one whose love has surrounded the whole heart, inside, outside. Every part of the heart is filled with his love. Because Habib is from, let's say, Khalil is from Khallat. Khallat means need. And Ibrahim alayhi salam, always felt the need of Allah when he was thrown in the fire, in all hardships, when he was extradited from his hometown. He was always, feeling helpless and in need of help of Allah. So Allah made him his Khalil by fulfilling his needs. And Habib is from Hub, and Hub is from Habbatun. Habbatun means grain, and a grain produces many grains. And you will see, have you seen vineyard where grapes grow? Well, you put the seeds inside, and the plant of the grapes, it covers the whole area, the trestles, and it spreads out everywhere. So from one grain, all these grapes and the plant grew. So similarly, hub is which goes over and around and covers the whole heart. Therefore, Habib's ranking is much greater and higher than the ranking of Khalil. So Muhabbat is better and higher in ranking than Khullat. Number two, others say Khullat is higher than Muhabbat. Then they say that Hazrat Ibrahim alayhi salam had just one sifat of being Khalil. But our Nabi sallallahu alayhi wasallam had both sifat. He was Khalil and Habib. And one, because in another riwayat, Inna Allah ittakhazani khalilan kama ittakhaza Ibrahim khalila. Allah has made me Khalil like he took Ibrahim as his Khalil. Now, the one who has two awsaf is greater and higher than the one who has one wasf. So in both cases, our Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's rank and maqam and fazilat is greater than the rank and maqam and fazilat of Hazrat Ibrahim Khalilullah ala Nabiyina wa alayhi salam. Then, وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, I will be the bearer of the banner of Hamd on the day of Qiyamah. Beneath it will be Adam and those after him, and this is not to boast. And I will be the first interceder and first whose intercession will be accepted on the day of Qiyamah, and this is not to boast. We've covered this before. पहले आगे हैं नहीं अल्फाज एक्सप्लेन कर दिया है मैंने. And I will be the first to shake the halq al-Jannah, the ring of Jannah. When you want to knock, तो पुराने ज़माने में अभी भी in old houses you get this metal ring and you knock with it. That's called halaq. Dhabt is both halaq al-Jannah and hilaq al-Jannah. Hilaq is plural of halqatun. So the round ring of Jannah on the door of Jannah, I will be the first to shake it and knock on there. فَيُفْتَحُ Allah, Allah will open it for me. فَيُدْخِلُنِيهَا, and admit me inside, and with me will be the fuqara muhajirin. And this is not to boast. And I am the most honorable among the first and the last to Allah. And this is not to boast. Rawahu Tirmidhi wa Darimi. चलिए आगे. وعن عبد بن قيس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة وإني قائل قول غير فخر إبراهيم خليل الله وموسى صفي الله وأنا حبيب الله ومعي لواء الحمد يوم القيامة وإن الله وعدني في أمتي وجاره من ثلاث لا يعمهم بسنة ولا يستأصلهم عدو ولا يجمعهم على ضلال رواه الدارمي. We are the last and we are the first on the day of Qiyamah. We are the last, meaning this ummah is the last ummah. In one hadith, what did he say? أَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ. I am the last prophet and you are the last ummah. So we are the last ummah. But on the day of Qiyamah, we will be the first to rush ahead. Meaning our hisab, kitab, judgment, everything will be first. We will be decided first. And others will be later on. We will be the first to enter Jannah. Others will come after us. So on the day of Qiyamah, we will be ahead of everyone. And I am going to see something without any boast. Ibrahim is Khalilullah, Musa is Safiullah, and I am Habibullah.
and with me will be the banner of Hamd on the day of Qiyamah. Allah has promised me with regards to my Ummah, and He has protected my Ummah from three things: that He will not put a drought which will cover them all and annihilate them, nor will their enemy annihilate them, and they will not collaborate on gumrahi and error. لا يستأصلهم لا يعمهم तो समझ में आ गया ना अम्म यउम्मु अम्मन के माना आम करना तो आम कहत नहीं आएगा لا يستأصلهم استأصل يستأصل استيصالا means to annihilate, to wipe out. So dushman will not wipe them out, and they will not get together on dalalat and gumrahi. وعن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا قائد المسلمين ولا فخر وأنا خاتم النبيين ولا فخر ولا شافع ولا مشفع ولا فخر. I am the leader of the Rasools, and this is not to boast. I am the seal of the prophets, and this is not to boast. And I am the first interceder, and the first whose intercession will be accepted, and this is not to boast. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الناس خروجا إذا بعثوا. I will be the first among people to come out of the qabr when they are resurrected. بعثوا, resurrected from the graves. وأنا قائدهم إذا وفدوا. I will be the leader when they go in delegation to Allah. So delegation will be led by him on the day of Qiyamah. وأنا خطيبهم إذا أنصتوا. I will be their khatib and speaker and preacher when they are all silenced. Ansata, to be silenced. وأنا مستشفعهم إذا حبسوا. And I will be the interceder for them when they are withheld. Istashfa'a, to ask for shafa'at. Habasa, to withhold, meaning withheld in Maidani Hashar. وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيِّسُوا. I will bring them good news when they will have lost hope. أَيِّسَ يَأِسُ يَأْسًا means to lose hope. So I will give them good news when they lose hope. الْكَرَامَةُ وَالْمَفَاتِيحُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي. All honor and keys on that day will be in my hand. وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي. The banner of Hamd on that day will be in my hand. وَأَنَا أَكْرَمُ وَلْدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي. I am the most noble among the children of Adam in the eyes of my Rabb. يطوف علي ألف خادم كأنهم بيض مكنون أو قال اللؤلؤ منثور. There will come around me 1,000 attendants as though they are white egg which has been kept safe, or as though they are pearls which are scattered. Do you understand all the words? Baydun, anda. Maknunun, छुपा हुआ महफूज रखा हुआ खूबसूरत सफ़ेद अंडा. और लूलून, मोती. मंसूरुन, नसरा, बखेरना, फैलाना, बिखरे हुए मोती. Meaning, Huzur will have hundreds of thousands of khadims, but 1,000 will be on this sifat. They will be so beautiful, like pearls and diamonds, and they will be running around doing khidmat of Huzur Akram sallallahu alayhi wasallam and his family members and his mehmans and guests who will come to his Jannat. So they will be ready to do the khidmat of all those who come to the Jannat of Hazrat Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam. हाँ जी चलो बस ख़त्म करो रियादुस सालिहीन पढ़ानी है. इतनी एक हदीस पढ़ लो. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال فوق حلة من حلل الجنة محكوما يوم عرش الله زعل من خلائق يوم ذلك المقام غيري. Then I will be made to wear a suit from the suits of Jannat, and I will stand on the right side of the Arsh, and no one from the creation will be standing in that position besides me. That is only for Hazrat Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam. Alfaz are clear, meaning other prophets will be made to wear some nice suits as well, but Huzur's clothing from Jannat will be made from pure silk, and it will be most beautiful. People will be, shocked and, to see such beautiful clothing upon Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam. And he will be made to stand on the right of the Arsh. Allah will say, Muhammad, stand here, and no one will be allowed to stand there besides him. In the other riwayat, Sallallahu alayhi al-wasila, قالوا يا رسول الله الوسيلة قال على درجة فإن لا ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون هو رواه الترمذي. Ask Allah to give me wasila. What is wasila? The highest ranking in Jannah. No one will get it except one person, and I have hope that I will be that one person. Wasila literally means al-manzila in al-malik.
a high status in the eyes of the king. Like ministers have a very high status in the eyes of kings. So Huzur said, ask Allah to give me that wasila, that high position. Sahaba said, what is that high position wasila you're talking about? And he said, it's the highest rank in Jannah. Only one person will get it. And I have hope that I will be that one person. Our Hazrat, Maulana Yusuf Mutala Sahib Rahmatullah Ali mentioned in the Dars under this hadith that Hazrat Mujaddid Al-Fisani Rahmatullah Ali, Shaykh Ahmad Sad Hindi, once said that I did special wazifa and prayed some Salatul Hajat and begged Allah to specialize this maqam of wasila for Hazrat Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam and give it to him. So Allah accepted my dua, and he was shown by way of kashf or dream that we have accepted your dua, and wasila has been specialized for Hazrat Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam. No one else will get it. Then our Hazrat said, but this does not mean that we stop asking for that wasila for Nabi sallallahu alaihi wasallam. We have to keep on asking, because the hadith told us after azan we have to Rabb hadi da'wati tamma wa salatil qaima ati Muhammadanil wasila. So we have to keep reading the dua of azan and asking for wasila. Though Hazrat Mujaddid Sahib dua was accepted and it was fixed for him, but we still have to keep making the dua. Chaliye. وعنه ابن كعب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبا وصاحب شفاعتهم. When is the day of judgment, I will be Imam of all prophets and their khatib and speaker, and I will be the master of the shafa'at for them, and this is not to boast. He will go and do shafa'at for them all. बस करो यार, बाद में पढ़ना, उधर रियादुस सालिहीन वाले वेट कर रहे हैं. ओके जी, अल्लाह पाक हमें हमारे नबी की कदर नसीब करे. अस्सलाम वालेकुम. क्यों जा रहे भाई? Kasih dia. क्यों रुके? घरों में रहा बस. सलाम कीजिए उधर. सलाम पेश करो. और वालेकुम सलाम. كيف حالكم؟ طيبين كويسين مرتاحين بخير والحمد لله. चलो यार, वहाँ से एक दूसरी रियादुस सालिहीन का नुस्खा ले आना पड़ेगा. ये नुस्खा है ना, इसमें पता नहीं चलता कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है. आपके नुस्खे में बराबर अंदाज़ा होता है कि एक पेज हुआ, दो पेज हुए, तो समझ ही नहीं पड़ती कितना पढ़ा है. चलो, कहाँ से है सबक? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम. वी आर रीडिंग रियादुस सालिहीन, बाब नंबर 95. बाबुन फी इस्तिहबाब तबशीर व तहनियत बिल खैर. This chapter is about desirability of giving good news and congratulating someone for good. Bashara yubashiru tabshir, खुशखबरी सुनाना, give good news, glad tidings. And tahniya, hanna yuhanniu tahniyatan means congratulate for something good. Allah said, فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. Give good news to my slaves who hear the words and follow the most beautiful of it. खुशखबरी सुनाओ, किनको सुनाओ? जो अल्लाह की बात सुनते हैं ध्यान से. देखो, अल्लाह ने ये नहीं कहा यस्माऊन अल-कौल, यस्तमिऊन, because istima means ध्यान से सुनना, full attention. Who hear my words with full attention and then follow the most beautiful of it. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. Allah's all words are beautiful. Everything Allah says is beautiful. But something might be more beautiful than others. Some ahkam might seem more beautiful than others. So they follow
the most beautiful of instructions which Allah gives. Allah says, يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ. Their Rabb gives them the good news of special mercy from Him and His pleasure and gardens in which they will have eternal bliss. Bashara, yubashiru yahan hai na. Jannatin lahum fiha na'im. Na'im means ni'mat, bliss. Muqim, muqim means da'im, eternal, never ending. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. And take good news of the Jannat which you were promised. Abshara yubshiru means to take the good news. I am giving you, so take it, which you were promised. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. We gave him good news of a young boy who will be forbearing, patient. Halim, forbearing. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى. Indeed, our messengers came to Ibrahim with good news. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. And his wife was standing. She smiled, so we gave her good news of Ishaq, and after Ishaq, Yaqub. Meaning, you will get a son and a grandson within your life. तो इसहाक अलैहिस्सलाम की भी खुशखबरी दे दी और कहा कि इसहाक बड़ा होगा, शादी होगी, उसके यहाँ बेटा होगा, उसका नाम याकूब होगा, उस वो भी तुम जिंदा होगे, तुम्हारी जिंदगी इतनी लंबी होगी. तो हमने उनको ये खुशखबरी सुना दी. फनादतुल मलाइकतु वहुव क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्ना अल्लाह युबश्शिरुका बियहया. Farishtas called out to him, meaning Zakaria, whilst he was praying namaz, standing praying namaz in mihrab, that Allah is giving you good news of Yahya. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. When the angel said, O Maryam, indeed Allah is giving you good news of a word from him whose name will be Masih. والآيات في الباب كثيرة. And verses with regards to basharat and good news are plenty. وعن ابي ابراهيم يقال ابو محمد يقال معاويه عبد الله بن ابي اوفى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجه ببيت في الجنه من قصب لا صخب فيه ولا نصب. Abdullah ibn Abi Awfa says, Huzur Akram sallallahu alayhi wasallam gave good news to Khadija of a house in Jannah made from one moti and pearl, one single diamond. And there will be no screaming in that house, palace, and nor will there be any fatigue and tiredness. Khadija is Khadija radiallahu anha. She sacrificed so much for the sake of Rasul Kareem sallallahu alayhi wasallam. And Rasulullah sallallahu alayhi wasallam loved her. And he said, all my children were from Khadija. So he gave her good news. This is when Rasul Kareem sallallahu alayhi wasallam was in Ghar Hira. Jibreel alayhi salam was sitting with him. And Jibreel said, Ya Rasulullah, Khadija is coming. She is climbing the mountain, Jabal Nur, and she is bringing food and drink for you. When she arrives, give her good news which Allah is giving her. Give her, in fact, he said, give her my salams and give her good news of this palace in Jannat. And this palace will be made from qasab. Qasab literally means bamboo stick. And bamboo stick is hollow from inside. So by one qasab, what is meant is one diamond moti. Okay. And दुनिया में तो छोटे छोटे मोती होते हैं, small. The largest diamond in the world is Kohinoor, which is on the crown of Queen, and it was stolen from India. तो ये तो पूरा एक महल जो है एक मोती का होगा. जैसे वो इस्लामाबाद में बहुत बड़ी जबरदस्त मस्जिद है, उसमें बीच में कोई पिलर नहीं है, ऐसी गोल मस्जिद बनाई गई है, बहुत ब्यूटीफुल मस्जिद है जो मीनार पाकिस्तान के पास. तो खूबसूरत मस्जिद बनाई है और वो एक ही जैसे बगैर उसमें कोई पिलर ही नहीं है, एक डोम से बनी है. तो समझो कि ये ऐसा शाही महल होगा हज़रत खदीजा का. It will be made from one single मोती and diamond for her. कितना खूबसूरत होगा, पूरा महल ही डायमंड का, रूफ भी, वॉल्स भी, everything from diamond. And ला सखब फीही, सखीब यसखबु सखबन की माना शोर मचाना. There will be no screaming in there. दुनिया में तो बहुत स्क्रीम होती थी. अभी यहाँ सबक पढ़ाते हैं बच्चे हो तो बहुत बच्चे शोर मचाएंगे. शाम को यहाँ मदरसा चलता है
तो हमारे वो छोटे छोटे बच्चे पोते पोतियाँ नवासी जो हैं नवासियाँ बहुत शोर मचाते हैं, पैसेज में भाग दौड़ करते हैं। तो बच्चे हैं तो खेल लेते, देखो चलो अभी टाइम है उनका खेलने का, जब क्लास में बैठेंगे पढ़ेंगे सब। तो शोर बहुत होता है दुनिया के घरों में, लेकिन हज़रत खदीजा के उस घर में कंप्लीट पीस एंड ट्रंक्विलिटी एंड सेरेनिटी होगी, शोर नहीं होगा। अनवला नसब, नसब नसब यनसुबु नसबन मीन्स थक जाना, तो नसब ओवर हियर मीन्स थकान। हाँ, ला यमस्सुहुम फिहा नसबुन वला यमस्सुना फिहा लुगूब, तो नसब मीन्स थकन। तो दुनिया में तो घर को साफ करने में इंसान थक जाता है। हमारी औरतें बेचारी घर साफ कर करके थक जा रही, हर वो कुआर लगाओ, सफाई करो, ये करो वो करो, किचन साफ करो, बर्तन साफ करो, ये करो, लेकिन वहाँ पर सफाई थकना नहीं है। क्यों थकना नहीं है? डॉक्टर इमरान साहब बैठो, रियादुस सालीहीन पढ़ो, कहाँ भाग रहे हो? चलिए, वहाँ पर थकना क्यों? बैठो रियादुस सालीहीन पढ़ो, मैंने कहा जाना है, काम पर जाना है, जाओ जाओ जॉब पर जाओ। हाँ, क्या कह रहे थे? वहाँ पर थकना क्यों नहीं है? क्योंकि नौकर बहुत होंगे, वहाँ खादिम बहुत होंगे, तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। औरतों को तो वहाँ मज़े ही मज़े हैं, नो कुकिंग नो क्लीनिंग, है जी, नौकर होंगे सब पकाएंगे। यहाँ पर भी दुनिया में भी, कुर्सी ले लो, कुर्सी पे बैठ जाओ, दुनिया में भी नौकर चाकर हों तो मज़ा आ जाता है ना। हमारा एक दोस्त अभी मोरक्को हॉलीडे करने गया था, उसने कहा कि हमने एक अपना प्राइवेट विला लिया था, उसके अंदर स्विमिंग पूल भी है, और एक मोरक्कन दो लेडियाँ आई थी खाना पकाने वाली, सफाई वाली, तो वो एक दिन के $25 दे देंगे, वो सब कुछ खाना पकाना, सफाई करना, ये सब हम लोगों को कोई फिक्र नहीं, और बेहतरीन खाना फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो सुबह दोपहर, सुबह का ब्रेकफास्ट भी बेहतरीन, दोपहर का खाना भी, शाम का खाना भी, मज़े ही मज़े, और लेडीज़ को मज़े ही मज़े, पकाने की फिक्र ही नहीं। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, मुझे भी नंबर देना, मैं भी जाऊँगा। चलिए, तो जहाँ लेडीज़ को जो है कुकिंग की बहुत फिक्र होती है, फरमाया कि जन्नत में लेडीज़ को ना कुकिंग की फ़िक्र है, ना साफ़ करने की फ़िक्र है, मज़े ही मज़े हैं, आराम ही आराम है। चलिए, وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه توضا في بيته ثم خرج فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا وجهها هنا. قال فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر ريس فجلست عند الباب وبابها من جديد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضا فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر ريس وتوسط خفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. इतना तर्जमा कर लो, थोड़ा थोड़ा करके फिर करते हैं। अबू मूसा अल-अशअरी कहते हैं कि he did wuzu in his house and then he exited the house and he said that today I am going to stick with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and stay with him throughout this whole day, meaning I'm going to do his khidmat and service and stay with him. He came to the masjid and he asked about Nabi sallallahu alaihi wasallam, and they said he's gone in that direction. Wajjaha hauna, wajhun means face. Wajjaha hauna means he's faced in that direction. He went in that direction. So I went out following his footsteps, asking regarding him until he entered Bire Aris. Bire Aris, आज हम ज़ियारत के लिए जाते हैं तो मुफ्ती शाकिर भोपाली साहब बताते हैं कि ये बीरे अरीस है, यहाँ बीरे अरीस था। तो वो जहाँ कुआं होता था ना, तो कुएं के इर्द गिर्द गार्डन होता था, फार्म ट्रीज होते थे, दरख्त होते थे, छाँव होता था, साया होता था, तो उस साये में बैठते थे, मज़ा आता था, इन द शेड. So he went in Biri Aris to relax. So I sat by the door, and the door was made from jadid. Jadid means chadi, fresh bamboo sticks. तो वो दरवाजे लकड़ी के थे, लेकिन वो लकड़ी जो है बैम्बू स्टिक्स को जॉइन करके मिला करके वो बनाया हुआ था. So the door was made from fresh bamboo sticks और छड़ी से, यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम fulfilled his need, meaning पेशाब इस्तिंजा वगैरह, and he did wuzu. Then I stood up to him, and فإذا हुआ, إذا is for mufajat. Suddenly I noticed that he had sat on bide aris, okay ji, on the well, and وتوسط قفها, and
he had sat in the middle of the wall around the well. You know, the wells, they have a little slightly raised wall, maybe half to your half of a man's तो उसमें से फिर तो so people don't fall inside, animals don't fall inside, kachara and dirt, the wind does not blow inside. So that wall was made from stone and cement. So he sat on there, lowering his feet inside the well. Okay, so he sat in the middle of the wall of the well, وَكَشَفَ عَنْ سَاقِيهِ, and he exposed his pindli mubarak, his calves, وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ, and he lowered them into the well. लटका दिया उनको. दल्ला युदल्ली तदलियतन वजात सैयारतुन फअदला दलवहु, लटकाना. तो अपने पाँव हुजूर ने कुएं में लटका दिए, क्योंकि कुएं से ठंडा ठंडी हवा आती है ना ठंडे पानी की, तो अच्छा लगता है, जरा रिलैक्स हो जाता है आदमी. So I did salam to him, and then I turned around and I sat near the door, and I said, today I am going to be the gatekeeper of Nabi sallallahu alaihi wasallam. فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا فقال أبو بكر فقلت على رسلك ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن فقال إذن له وبشره بالجنة فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه. So Abu Bakr came radiyallahu anhu, he knocked the door. I said, who is this? He said, it's Abu Bakr. I said, wait a minute. Ala rislik, meaning, ठहर जाओ, take it easy. Take it easy, calm down. Take it easy, 1 minute. So then I went to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and said, Ya Rasulullah, this is Abu Bakr seeking permission to enter upon you. He said, allow him to come in and give him good news of Jannah. So I proceeded until I said to Abu Bakr, go inside, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is giving you good news of Jannah. He says, so Abu Bakr radiyallahu anhu came inside until he sat on the right of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam and on the wall of the well, and he lowered his feet into the well as Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam had done, and he exposed his shin and calf. ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني فقلت إن يريد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به فإذا الإنسان يحرك الباب فقلت من هذا فقال عمر بن الخطاب فقلت على رسلي ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن فقال إذن له وبشر بالجنة فجئت عمر فقلت أذن أدخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودل رجليه في البئر. Then I returned to the door and I sat down, and I had left my brother doing wudu and to join me. So I said to myself, if Allah wants good for so and so, meaning my brother, then Allah will bring him. And suddenly one person was knocking the door. Yuharrikul bab, shaking the door, meaning knocking. He was shaking the door to open it. I said, who's this? And he said, Umar ibn Khattab. I said, wait a minute. Then I went to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I did salam to him and said, this is Umar seeking permission. He said, allow him and give him good news of Jannah. I came to Umar. I said, he gave permission, come inside, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is giving you good news of Jannah. So he came inside and he sat with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on the wall of the well on his left, because on his right was Abu Bakr. And he also lowered his feet into the well. Then ثم رجعت فجلست فقلت إن يريد الله بفلان خير يعني يخاه يأتي به فجاء إنسان فحرك الباب فقلت من هذا فقال عثمان بن عفان فقلت على رسلي وجئت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه فجئت وقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس وجاههم من الشق الآخر قال شيء فقال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم متفق عليه. He says, then I returned and I sat down, meaning near the door, and I said, if Allah wants good for so and so, meaning my brother, Allah will bring him.
So another third person came and he shook the door, knocked. I said, "Who's this?" And he said, "It's Osman ibn Affan." And I said, "Take it easy." And I went to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and informed him. And he said, "Give him permission to come in and give him good news of Jannat with some bala which will strike him, calamity, musibat which will afflict him." Ma balwa, balwa means bala, musibat, calamity. Tusibuhu, asaba yusibu isabatan, to affect, afflict, which will afflict him. What was this balwa tusibuhu? हजरत उस्मान की शहादत का किस्सा। बलवाइयों ने आपके घर को घेर लिया था और तकरीबन 3 हफ्ते तक घेरे रखा और फिर आपको शहीद कर दिया. So this problem will come on him, but he will get Jannat. So give him good news of Jannat with some calamity which will strike him. So I came and I said, enter, come in, and Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam is giving you good news of Jannat with some bala and problem which will afflict you. So he came inside and he saw that that side of the wall was full. So he sat facing them on the other side. Sharik says, Sa'id bin Musayyab said that I interpreted that with their graves. فَوَجَلَ الْقُفَّ قَدْ مُلِيَ, meaning this side of the wall was full. So he had to sit on the opposite side, facing Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam and Abu Bakr and Umar. Now, Sharik narrates, Sharik is one of the Ruwat. He narrates that Sayyid bin Musayyib said, I took the meaning of these that they're graves. Because Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakr, Umar are all in one place, and Hazrat Usman is at a distance in Baqi, but not so far away. He's only at a distance. He's not like in America or Canada or Europe. He's only that bit, little bit far away. So it's like the well, and on this side are the 3, and on that side is Hazrat Usman. وزاد في رواية وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. Huzur instructed me to guard the door. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال الله المستعان. In it is also that when Uthman was given good news, he praised Allah and he said, Allah's help is sought. Allahul Musta'an, Allah's help is sought. قوله وجه بفتح الواو وتشديد الجيم أي توجه, meaning he's faced that direction, gone in that direction. وقوله بيريس هو بفتح الهمزة وكسر الراء وبعدها ياء مثنات من تحته ساكنة ثم سين مهمة وهو مصروف ومنهم من منع صرفه. مصروف means منصرف. منع صرفه means غير منصرف. Some people have said أريس is منصرف, others have said أريس is غير منصرف. القف بضم القاف وتشديد الفاء هو المبنى حول البيد. It is that construction which is around the well. When it's مجاري and the wall around the well is called قف. على رسلك بكسر الراء على المشهور وقيل بفتحها أي أرفق. Urfuq means be gentle, take it easy. Rafaqa yarfuqu rifqan means आराम से gentleness से के साथ काम करना. So ala risli means take it easy. Wait a minute, I'll ask permission, then I'll allow you to enter. So in the hadith there is yubashiruka bil jannah. Huzur gave basharat. So it's good to give basharat and good news to people and congratulate them upon something good. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا ابو بكر وعمر في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين ظهورنا فابطا علينا فخشينا ان يقطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت اول من فزع فخرجت ابتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتيت حائطا للانصار لبني النجار فدرت به الاجد ذبابا فلم اجد. We were sitting around Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. With us was Abu Bakr and Umar in a group. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stood up from in between us, and he delayed his return upon us. And we were fearful that he be kidnapped from us. And we were shocked and alarmed. We stood up, and I was the first one to be alarmed. And I went out in search of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam until I came upon a garden, an orchard of Ansar which belonged to Banu Najjar. So فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَابًا فَلَمْ أَجِدْ. I went around and around to see if I can find a door to enter, but I could not find a door. فَإِذًا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِّن بِيدِ خَارِجَةٍ. Suddenly there was a stream which was going inside the garden
from a well which was outside. وَالرَّبِيعُ الْجَدْوَلُ, and Rabi' means a small stream of water. فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ, I shrunk my body like a fox shrinks his body. فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم, and then I went inside to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فَقَالَ, he said without looking at me, Abu Huraira, is Abu Huraira? I said, yes, Ya Rasulullah, it's me. قال ما شأنك? What's up with you? قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع. You were بين ظهرانينا, in between us, you stood up and you delayed your return upon us. So we feared that you might be kidnapped from us. We were shocked, and I was the first one to be alarmed. فأتيت هذا الحائط فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. I came to this garden, and I shrunk my body like a fox shrinks his body. And these are people behind me, they're all looking for you. فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه. He said, O Abu Huraira, whilst giving me his 2 sandals. فقال اذهب بنعلي هاتين, go with these 2 slippers of mine. فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. Whoever you meet behind this wall who is testifying La ilaha illallah with yaqeen in his heart of it, give him good news of Jannat. And he mentioned the hadith in full. Go over it again. Huzur was, people were sitting around Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. With them was Abu Bakr, Umar, and a small group. Okay. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. He stood up from in between us. أظهرنا is لفظ زائد مقحم. It means من بيننا, from among us. فأبطأ علينا, and he delayed his return to us. أبطأ يبطئ إبطاء means देर करना, वापस आने में देर कर दी. असल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा ये थी, ये अपने when he wanted to go somewhere, right, and he was to come back, sorry, है तेरे को तकलीफ दी, मत ही आवाज़ नहीं सबक ना लिए, आज ने 30 पाउंड नहीं सब मोटा रहा दियो से, ने आज तो हम 500 पाउंड से, एक बार नहीं चढ़ता रो, ज़ख़म ना पैसा, कहीं बार, मान भैया कल बात कर लीजिए, कल बात कर लीजिए, एक बार नहीं, पैसा मोटा है, एक बार में चढ़ पड़ा वाली से, तो ऐसा बात, लेकिन इधर देखा है, कहाँ पे क्या जो है, तो बंदे नहीं काटो में हमारा मार दो, जिला से, ताप है भी कोई हो तो ज़ख़म ना दीजिए आप लोग में नहीं जी. Huzur Akram sallallahu alayhi wasallam's habit was that when he went somewhere and he was going to come back, he would leave some sign that he's going to return. Right? For example, his shawl or rumal or something, so people know that he's coming back. But if he was not going to return, he would take everything with him. So Sahaba knew that he's not going to come back. Now on this occasion, he had left his shawl or something behind. Sahaba knew that he's going to come back. Now, فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا, he delayed his return upon us. And وَخَشِينَا أَن يُقْتَطَعَ دُونَنَا, and we were scared that he might be taken away from us. خَشِيَ يَخْشَى خَشِيَةً means to fear. And إِقْتَطَعَ يَقْتَطِعُ إِقْتِطَاعًا means किसी को काटना. So he may be cut off from us. Cut off means kidnapped. Someone might kidnap him. دُونَنَا, away from us. وَفَزِعْنَا, and we were scared. فَقُمْنَا, I stood up and I was the first to be alarmed. Fazia yafza'u means to be shocked, to be alarmed. So I went in search of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam. Ibtigha yabtaghi ibtighan means
to search, seek, until I came upon a ha'id lil ansar libn najjar. Ha'id literal meaning is wall. Now, if a garden or an orchard is surrounded by a wall, then that garden is called also ha'id. Right? There are various names for garden like bustan, hadiqatun, ha'itun. Right? Bustan is general. Hadiqa and ha'it is for a bagh which is surrounded by a wall. So it's secure. Like Alhamdulillah, our HLC has wall around it. Only one entrance. So it can be classed as ha'it, hadiqa. Right? So I went to this bagh and garden of an Ansari who of Banu Najjar. Fadurtu bihi, dare duru dawranan means to go round round. So I went round it. Can I find the gate to it? I couldn't find a gate to it. Why couldn't you find? There was gate to it. But when your mind is boggled and you're confused, you can't see it. It's right in front of you, but you can't see it. So Abu Hurairah was so, worked up and he was so worried about Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, he couldn't see the door. So he was going round and round. बगल में बच्चा और सारे गांव में ढूंढा, वो चश्मा पहने हुए मेरा चश्मा कहाँ गया तो वो नजर नहीं आता, भूल आ जाती है. तो अबू हुरैरा बेचारे इतने शौक थे कि he couldn't see. So what he saw was rabi'un yadkhulu fi jawfi ha'idin min bidin kharijatin. Rabi'un means a stream. क्योंकि बाहर से पानी ले जाना पड़ता है ना बाग में, तो there was a well outside. So what they used to do was they would pour water from the well into that stream, and the stream would take the water inside the garden. So there is a little bit of space under the wall for the water to pass through. So there was a stream which was going inside the garden from a well which was outside. Jawf means inside. Birin kharijatin, bir well kharijatin, outside. فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب. फॉक्स को कहीं जाना है तो बिल्ली की तरह फॉक्स भी क्या करता है, यूं श्रिंक करके घुस जाता है अंदर. तो I also shrunk my body and somehow just sneaked inside from that stream. And as I went inside, I entered upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he said, Abu Huraira, as a question. And Hal anta Abu Huraira? Is that Abu Huraira? Perhaps हुजूर को कश्फ हो गया कि अबू हुरैरा आ गया है, या आपको अंदाजा हो गया कि अबू हुरैरा ही सबसे पहले फिक्र में पड़ा होगा, बिकॉज अबू हुरैरा हर वक्त हुजूर के साथ रहते थे. अबू हुरैरा आ गया है. मैंने कहा जी हुजूर मैं आ गया हूँ. क्या हुआ? Why you looking so worried? उन्होंने कहा हुजूर आप हमारे बीच में थे, आप उठ खड़े हुए, आपने देर कर दी वापस आने में, हम डर गए कि आपको कोई हमसे काट न दे, किडनैप न कर ले, तकलीफ न पहुंचाए. हम चौंक गए. सबसे पहले मैं चौंका. मैं आया इस बाग में, मैं इस तरह सुकड़ करके घुसा जैसे एक लोमड़ी सुकड़ करके घुसती है, और ये लोग मेरे पीछे हैं, लोग भी आपको ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं. फरमाया अबू हुरैरा कहते हुए आपने मुझे अपने दोनों चप्पल दिए और फरमाया जा मेरे ये दोनों चप्पल लेकर, और इस दीवार के पीछे तुझे जो कोई मिले कलमा पढ़ता हो यकीन के साथ. कलमा पढ़ता हो किसके साथ? हाँ, मुनाफिक नहीं. मुनाफिक तो यकीन के साथ नहीं पढ़ता, लेकिन यकीन के साथ कलमा पढ़ता हो तो उसको जन्नत की खुशखबरी सुना देना. बस आगे लंबी हदीस है, मुस्लिम में है. उन्होंने हुआ क्या कि अबू हुरैरा उन चप्पल को लेकर निकले. अब तो काम डाउन हो गए, तो दरवाज़ा नज़र आ गया, तो दरवाजे से निकल गए. जैसे ही बाहर निकले तो सबसे पहले कौन मिले? हज़रत उमर. हज़रत उमर ने कहा अबू हुरैरा ये हुजूर की चप्पल लेके कहाँ जा रहा है? और सब बिकॉज पीपल न्यू हुजूर चप्पल रिकग्नाइज कर लेंगे तो हुजूर की चप्पल है, तो कहाँ जा रहे चप्पल लेकर? कहा हुजूर ने मुझे ये चप्पल दी है. फरमाया जाओ इस बाग के पीछे जो कोई तुमको मिले कलमा पढ़ता हो यकीन के साथ, उसको जन्नत की खुशखबरी दे दो. उन्होंने कहा अच्छा ये मैसेज है. तो छाती पे एक थप्पड़ दिया हज़रत उमर ने. हज़रत उमर का तो हाथ भी बहुत भारी था, थाड़ दे के जो लगाया, अबू हुरैरा पीछे गिरे. वापस जाओ, हुजूर को कहो ऐसी बशारत लोगों को न दो, लोग जो इस कलमे में भरोसा करके बैठ जाएंगे, नमाज पढ़ना इबादत करना छोड़ देंगे. अब अबू हुरैरा बजाय आगे जाने के पीछे वापस लौटे, और हज़रत उमर भी उनके पीछे पीछे. अब जो अंदर बाग में आए तो रो रहे थे, आंसू निकल रहे थे. उसने कहा अबू हुरैरा क्या हुआ? सब हज़रत उमर मिले और तो पिटाई कर दी मेरी. हम कहा ये क्या कर रहे हो तुम? इतने में हज़रत उमर भी आ गए. हम कहा या रसूलल्लाह
आपने अबू हुरैरा को चप्पल लेकर भेजा था कि खुशखबरी सुनाए सबको, कलमा पढ़ता हो यकीन के साथ तो जन्नती है। कहा मैंने कहा था प्लीज़ ऐसा ना करो, ला तो बशीर हो फ़यत्तकीलू। लोग कलमा पे भरोसा करके बैठ जाएंगे, कोई अमल करेगा ही नहीं। मेरे पास तो कलमा है, मैं तो जन्नती हूँ, तो नमाज़ पढ़ने की क्या ज़रूरत, रोज़ा रखने की क्या ज़रूरत, ज़कात देने की क्या ज़रूरत, और गुनाह से बचने की क्या ज़रूरत, कलमा है ना, मैं तो जन्नती हूँ। तो हुजूर ये न करो आप ये ऐसा। अच्छा चलो फिर रहने दो, बैठ जाओ। हुजूर ने भी हज़रत उमर की राय पसंद की और ये खुशखबरी नहीं दी। और हज़रत उमर की पिटाई क्यों की? हज़रत उमर ने हज़रत अबू हुरैरा की पिटाई क्यों की? धक्का मारा, उसको थप्पड़ दिया, छाती पर गिरा दिया और रुला दिया। ऐसी जोर से थप्पड़ मार के हज़रत अबू हुरैरा तो रो दिए और आंसू निकल आए। क्यों? इसलिए कि हज़रत उमर को पता था कि कुछ दिन पहले ही ये हुआ था कि हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को ऐसी खुशखबरी हुजूर ने दी थी। फिर हज़रत मुआज़ ने पूछा था कि हुजूर मैं लोगों को बता दूं, वो भी खुशखबरी ले। हुजूर मैं नहीं, लोगों को मत बताओ वरना भरोसा करके बैठ जाएंगे। तो अबू हुरैरा को वो बात याद रखनी चाहिए थी, हुजूर को रिमाइंड करना चाहिए था। अबू हुरैरा बुद्धू क्यों बने, रिमाइंड क्यों नहीं किया? मगर अबू हुरैरा का मसला ये था कि वो तो अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी में डूबे हुए थे। अल्लाह के रसूल ने जो कहा वो करने के लिए दौड़े। इससे ये भी मालूम हुआ कि बाज़ मरतबा मफजूल के दिल में वो बात आ जाती है जो अफजल में नहीं आती, तो फिर अफजल को मफजूल की बात कबूल करनी चाहिए और उस पर रिजेक्ट नहीं कर देना चाहिए। हुजूर ने हज़रत उमर की बात कबूल कर ली। चलिए आगे। रबी नहर सगीर वहुवल जदवल बिफतहिल जीम कमा फस्सरहु फिल हदीस। रबी उनके माना छोटी नहर, छोटी रिवर, और वो जदवल है जैसे हदीस में तफसीर कर दी है। व क़ौलु इहतफज़तु रुविय बिर्राई वज़्ज़ाई व मानाहु बिज़्ज़ाई तज़ाममतु व तसाग़रतु हत्ता अमकननी दुख़ूल। अगर ये ज़ा के साथ है तो इसके माना है मैंने अपनी बॉडी को मिला ली और मैं छोटा बन गया ताकि मुझे अंदर घुसना मुमकिन हुआ। समझ में आ गया? चलिए, अगर इख्तफरतु है तो वो हफरुन से है, और हफरा के माना क्या है? खोदना। तो मैंने खोदा, तो जरा सी मिट्टी खोद के फिर मैं अंदर घुसा। وعن ابي شماسة رضي الله عنه قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياق الموت يبقي طويلا وحول وجهه الى الجدار فجعل ابنه يقول يا ابتاه اما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا اما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فاقبل بوجهه فقال ان افضل ما نعد شهاده لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اني قد كنت على ثلاثه اطباق لقد رايتني وما احد اشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا احب الي ان اكون قد استمكنت منه وقتلته فلو مت على تلك الحال لكنت من اهل النار فلما جعل الله الاسلام في قلبي اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فليبايعك فبسط يمينه فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو قلت اردت ان اشترط قال تشترط بماذا قلت ان يغفر لي قال ما علمت ان الاسلام يهدي وما كان قبله وان الهجره تهدي وما كان قبلها وان الحج يهدي وما كان قبله وما كان احد احب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اجل في عيني منه وما كنت اطيق ان املا عيني منه اجلالا له ولو سئلت ان اصفه ما اطقت لاني لم اكن املا عيني منه ولو مت على تلك الحال لرجوت ان اكون من اهل الجنه ثم ولينا اشياء ما ادري ما حالي فيها فاذا انا مت فلا تصحبني نائحه ولا نار فاذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم اقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى استانس بكم وانظر ماذا اراجع به رسول ربي. अबू शमासा कहते हैं we were present with Amr ibn al-Aas and he was in the throes of death and crying for long periods. हो गया जी। अमर इब्न al-As के पास हम मौजूद थे और वो मौत की सकरात में थे और बहुत लंबी देर तक रो रहे थे। वहव्वल वजहहु इलल जिदार, उन्होंने अपना मुंह दीवार की तरफ फेर दिया। उनके बेटे कहने लगे अब्बा जान, क्या हुजूर ने आपको ये खुशखबरी नहीं सुनाई थी? क्या हुजूर ने आपको ये खुशखबरी नहीं सुनाई थी? हो गया जी। ये खुशखबरियाँ गिनवाने लगे। हुजूर ने कहा था अम्र इब्न al-As मिन सालिही कुरैशिन, अम्र इब्न al-As कुरैश के नेक जवानों में से हैं। और अस्लम अन्नास व आमन अम्र इब्न al-As, लोग मुसलमान हुए और अम्र इब्न al-As ईमान लाए। क्योंकि अम्र इब्न al-As जो हैं वो बिटवीन सुलह हुदैबिया एंड फतह मक्का, he and Khalid bin Walid both were best friends, so they both came from Makkah and to Medina Sharif and embraced Islam, and Huzur was really happy upon their embracing Islam. In fact, Huzur made Amr ibn al-As the leader of the army in Ghazwa of Zatus Salasil. So he gave him good news that हुजूर ने आपको ये भी खुशखबरी दी है, ये भी दी है, ये भी दी है। ये इमाम नववी का इस्तिलाल है।
Ama basharaka, to give good news. Huzur had given him good news. So when he said this, Ya abatahu is instead of Ya abi. Okay? Ya abi, Ya harfe mutakallim zamir can be changed with ta alif ha to extend prolong the word. So because Ya abi, you have to stop suddenly. And Ya abatahu लंबा खींच सकते हैं, इसलिए अरबी में इस तरह बोलते हैं, इंस्टेड ऑफ या अबी या अबताहु. His son, who's his son? Abdullah ibn Amr ibn al-As. So Abdullah ibn Amr ibn al-As began to say, Ja'ala Shara, began to say, O Abba, हुजूर ने आपको ये खुशखबरी नहीं दी, आपको ऐसी खुशखबरी नहीं दी. فأقبل بوجهه. Okay, when did Amr ibn al-As die? In the year 43 after Hijrah. Okay, during the reign of Hazrat Amir Muawiyah radiyallahu anhu. So, and he was the governor of Misr. He is the Fatih of Egypt. Fatih of Misr. We went to his grave when we went to Egypt now. Uqba ibn Amir ki bhi wahan hai, aur Amr ibn al-As bhi wahan hai. So, فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ, he turned around with his face. أقبل متوجه हुए, तवज्जो की अपने चेहरे से. Because he had faced his towards the wall, so he turned around and faced people. And then he said, the best thing we can prepare for Akhirat is Shahadatu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. That's the best thing you can have. You can die with Kalma Iman. That's the best thing you can have. And وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَطْبَاقٍ, I have been through 3 levels or 3 stations, positions, maqam in my life. Atbaq is plural of tabaq. Tabaq ki maana hai لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. Surah Inshiqaq mein. Tabaq ki maana level. I have been through 3 stages. 3 stages in my life. The first stage, لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي. I have seen myself in such a state that there was no one who was more severe in hatred of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam than myself. وَلَا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ قَدْ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ. And there was no one who would have loved more to grab hold of him and kill him than myself. فَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ, had I died in that state, لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ, I would have definitely been a Jahannami. This is, he's talking about his Jahiliyyah period. Because Amr ibn al-As, his father is, who's his father? Al-Aas ibn Wa'il al-Sahmi, who was a very staunch enemy of Islam. So his son was also same. Amr ibn al-As was also a very staunch enemy. So he said, in that condition, I hated Prophet ﷺ to bits. And I would have loved to grab hold of it. Istamkana, istimkanan means अच्छी तरह पकड़ना, अच्छी तरह काबू में ले लेना. अमकन युमकिनु, इम्कान के माना भी काबू में ले लेना. तो अच्छी तरह काबू में पकड़ लूं, grab hold of him fully and kill him. I would have loved to do that. And Amr ibn al-As was among those, you know, when Hijrat Habsha happened, in the year 7 after Nubuwwat, and Quraysh sent a delegation to Habsha with lots of gifts to return and send them back. Amr ibn al-As was in that delegation. He was the speaker in there. He said, these people have run off, send them back. But Najashi said, nope, I will listen to them first, then I will decide. And he listened, and then he said to Amr ibn al-As and the delegation of Quraysh, take your gifts away, I don't want it. I'm not going to send them back. They can stay here with peace. I'm giving them asylum. So Amr ibn al-As is talking about that pre-Islamic state and Jahiliyyah. Do you understand all the words? फिर से एक दफे पढ़ लो. I have seen myself, and there was no one who hated Rasulullah sallallahu alaihi wasallam more than myself. Nor was there anyone who would have loved more to grab hold of him and kill him than myself. So had I died in that condition, I would have been a Jahannami. Now second stage. فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. When Allah placed Islam in my heart, I came to Nabi sallallahu alaihi wasallam, and I said, "Ubsut yaminak falyubayyak." Can you stretch your right hand so I can give you my pledge? فَبَسَطَ يَمِينَهُ. He stretched his hand, but I retracted my hand. فَقَبَضْتُ يَدِي. I retracted it. अल्फाज समझ में आ गए? उबसुत यमीनक बसत यबसुतु के माना फैलाना, spread it. And फलीउबायक, मैं
आपके हाथ में हाथ देकर प्लेज करूं, क्योंकि बैयत करते थे तो ऐसे हाथ में हाथ दे करके बैयत करते थे। और आज भी हमारे जो मशाइख तसव्वुफ बैयत करते हैं तो हाथ पकड़ के बैयत करते हैं। तो आप मेरा हाथ, मुझे अपना हाथ दीजिए, मैं बैयत करता हूँ इस्लाम की। आपने हाथ फैलाया, लो, तो मैंने हाथ वापस खींच लिया। तो फ़क़बज़्तु तो यदी फ़क़ाल मा लका या अम्रु, ये क्या हुआ अम्र, क्या कर रहे हो, व्हाट्सअप विद यू, मा लका, व्हाट्सअप विद यू। क़ुल्तु अरदतु अन अश्तरिदा, आई वांट टू मेक वन कंडीशन। क़ाल तश्तरिदु बिमाज़ा, what condition do you want to make? क़ुल्तु अन युग़फ़र ली, that I am forgiven, I've done many wrongs, so I want forgiveness from Allah, that Allah forgives me my past. And he said, أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله, do you not know that Islam demolishes, destroys whatever was done before it, and Hijrat destroys whatever was done before it, and Hajj destroys whatever was done before it. Okay? Islam destroys and you are becoming Muslim. Hijrat and you have done Hijrat. So Islam पीछे पहले के सारे गुनाह ख़त्म कर देता है, मिटा देता है, मुनहदिम कर देता है, डिस्ट्रॉय और डिमोलिश और जेसीबी से, बुलडोजर से क्रश कर देता है. So Islam destroys and wipes out everything that was committed before it. Hijrat wipes out everything that was committed before it, and Hajj wipes out everything that was committed before it. Hajj as well, हुजूर ने हज भी इंक्लूड किया. इससे बहुत से उलमा ने दलील पकड़ी कि जिस तरह इस्लाम से कबीरा गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं, तो इसी तरह हिजरत और हज से भी कबीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं. हो गया? बिकॉज हज इज स्पेशल, इट्स ए ह्यूज स्ट्रगल, you have to spend so much money and sacrifice, time, effort. So Allah Pak has kept Hajj different from other amal. Like wuzu, namaz, your small sins are forgiven. For major sins you have to do tawbah. But with Hajj, Allah Pak will give maghfirat for major sins as well. So this is why these three are connected. And then he says, وَمَا كَانَ أَحَدٌ, there was no one more beloved to me than Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nor anyone more revered and greater in my eyes than him. हो गया जी. ما كان أحد أحب ज़्यादा महबूब, ज़्यादा प्यारा, वला अजल्ला और ज़्यादा अज़मत वाला, and बड़ाई वाला, great, more greater and more revered in my eyes than him. وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا, I was not able to fill my eyes from him due to his ijlal and his ikram and ihtiram and adab. And if I was asked to describe him, I cannot describe him because I would never fill my eyes from him. Okay, in that condition, ma kuntu utiqu, ataqa yutiqu itaqatan means taqat rakhna. I did not have the taqat and strength to amla'a aynayya minhu, to fill my eyes from him. Meaning, I would always look down in his presence. I would never stare at him. So I did not have the ability to fill my eyes from him due to his ijlal. I had so much azamat and adab and ihtiram and respect from him, for him, I could never look at him, I couldn't stare at him. Ijlalan lahu, ajalla yujillu ijlalan, ki maana azamat, ihtiram, adab. If I was asked to describe him, I can't describe him, because I had never filled my eyes from him, I would never stare at him. If I had died in that condition, I would have hoped to be from the people of Jannat because of my love for him and his du'as. But then my third stage, walina ashya'a, wullina ashya'a, we were appointed on some governorship and some affairs and matters, ma adri ma hali fiha. I don't know what my condition is with regards to that. You know, at the time of death, khawf and fear was ghalib on him. He was really scared that after Huzur passed away, we've done many things, good things, but I feel we've done some bad things as well. I don't know. I don't know what's going to happen to me. I'm really scared. So, فَإِذَا أَنَا مِتُّ, when I die, فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ. Muttu, mittu, both are correct. Then do not let na'iha accompany me, nor any fire.
नाइहतुन फला तसहबनी, साहिब यसहबू के माना साथ साथ चलना, मेरे साथ मेरे जनाजे में न चले। नाइहा मातम करने वाली, a wailing woman, a woman who juta juta crying. So do not let a wailing woman accompany my janaza, nor any fire. In the time of Jahiliyyah, they used to take fire, roshni, उजाले के लिए साथ साथ लेकर चलते थे. I don't want any fire to be in my janaza, not even for light. उजाले के लिए भी नहीं, कोई लाइट लेकर मत चलना. फिर जब मुझको दफन कर दो तो शुन्नु अलैय तुराब शन्नन, तो मुझ पर मिट्टी धीरे धीरे डालना. शन्ने शुन्नु शन्नन के माना धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी डालना. तो जेसीबी के जरिए पूरा धाड़ दे के एक साथ मत डाल देना, ज़रा धीरे धीरे फावड़े से डालना. फिर सुम्मा अकीमु हौल कब्री, then stand around my qabr qadra ma tunharu jazurun, for such amount of time in which camels are slaughtered, وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا, and the meat is distributed, حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ, so that I can familiarize myself with you, وَأَنْظُرَ, and I can see مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي, how I can respond to the messengers of my Rabb. Do you understand all the words? فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي, when you bury me, shunnu, explained it, aqimu hawla qabri. Aqimu, aqama yuqimu means to stand. So stand yourselves, make yourselves stand around my qabr for a little moment. How long? Such amount of time in which a camel is slaughtered. Tunharu, nahara yanharu ke mana nahar karna. Jazur means camel. Okay, a camel is slaughtered and its meat is distributed. You know, Arabs were very swift in this. They could do this in 15-20 minutes, half an hour. फटाफट जल्दी जल्दी. अभी और नहर हुआ, खून निकल आया, थार से ऊँट गिरा तो जल्दी से उसके कोहान काटी, हम्प, और उसके बाद गर्दन अलग की, चमड़ी काटी, गोश्त निकाला और टुकड़े टुकड़े किया और तकसीम कर दिया. अगर उसमें 7 आदमी शेयर कर रहे हैं तो 7 हिस्से बनाए, हर एक को एक एक हिस्सा दे दिया. तो बहुत स्विफ्ट में हाफ एन आवर, 45 मिनट्स मैक्सिमम. So stand around my qabr to that amount of time in which a camel is slaughtered and its meat is distributed, meaning at least half an hour, 45 minutes. Don't just मिट्टी डाल के फौरन मत भाग जाना, वहाँ थोड़ी देर खड़े रहना. तो कब्र के पास ज़रा से चलो 2-4 मिनट 5 मिनट तो खड़े रहना चाहिए. यासीन पढ़ लेनी चाहिए, सूरह मुल्क पढ़ लेनी चाहिए, मरहूम के इशारे सवाब कर देना चाहिए. हमारे बिदती भाइयों के यहाँ तो कलमा पढ़ाते हैं जोर से. भाई देखो कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह. अभी फरिश्ता आएगा, पूछेगा तुमको मन रब्बु का मा दीनु का मन नबीयु का, तो जवाब दे देना रब्बी अल्लाह, जवाब दे देना दीन अल इस्लाम, जवाब दे देना नबी मोहम्मद. तो वो खड़े रहकर उसको सब तलकीन करते हैं, पढ़वाते हैं उससे. तो हमारे यहाँ तो ये नहीं है, तलकीन जो है वो मरने से पहले है, मरने के बाद नहीं. लेकिन अगर वो कोई कर भी दे तो गुनाह का काम नहीं होगा. लेकिन हमारा शिआर नहीं है, क्योंकि सहाबा ताबीन ऐसा करते नहीं थे, इसलिए नहीं करना चाहिए. और लेकिन कुछ लोग करते हैं, इसको ज़रूरी समझते हैं, तो वो ठीक है, उनका मसलक है, करें वो जो चाहें. हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. हमारे यहाँ क्या है, सिर्फ जैसे इन्होंने कहा ना कि खड़े रहना थोड़ी देर मेरे कब्र के पास, कुरान शरीफ पढ़ना, हत्ता अस्तअनिस बिकुम, ताकि मैं तुमसे मानूस हो जाऊँ. क्योंकि कब्र में गए हैं ना तो वहशत है ना, घबराहट है, अचानक चौंक गए हैं. तो अभी वहाँ जाकर के वो रूह जो है वापस आती है और फरिश्ते खड़ा करते हैं, तो मैं देखूं कि बाहर लोग भी खड़े हैं. क्योंकि हदीस में है इन्नहु लयस्मउ क़रअ निआलिहिम, जब मैयत को कब्र में रखा जाता है और लोग चलते हैं तो उनके चप्पल की जो चाप है, टप टप टप, वो भी मैयत सुनता है. ही कैन हियर द पीपल रिटर्निंग. बल्कि लोग जो खड़े हैं, मैयत उनको देख भी सकता है, उनकी बातें भी सुनता है. तो इसलिए उन्होंने कहा मैं थोड़ा मानूस हो जाऊँ, खबर में थोड़ा उन्स हो जाए, और वह अनजुरा, और मैं देख लूँ माज़ा उराजिउ बिही रसूल रब्बी, मैं अपने रब के फरिश्तों को क्या जवाब दे सकूँ, तो मुझे वो जवाब भी जहन में आ जाए. इसलिए तुम मेरे पास थोड़ी देर खड़े रहना. और ये समझिए कि ये तो खड़े रहने से वहाँ उन्स होता है, तो कुरान पढ़ने से उन्स नहीं होगा, ज़रूर होगा. इसलिए मैयत के पास, कब्र के पास कुरान पढ़ना चाहिए और मैयत को इसाले सवाब करना चाहिए. मैयत खुश होता है.
और ये है रसूल रब्बी, फरिश्ते आएंगे जवाब देना है। उस दिन किसी ने क्लिप भेजी, मतलब बाप पूरा हो गया है। शुन्नु अय सब्बूहु कलीलन कलीलन वल्लाहु आलम, थोड़ा थोड़ा करके डालना। बिशीनिल मुअजमा व बिल मुहमला, शीनिल मुअजमा के माना 3 नुक्तों वाली शीन, और मुहमला के माना बगैर नुक्तों वाली सीन। मुअजम के माना नुक्तों वाला लफ्ज़ और मुहमल के माना बगैर नुक्ते वाला। तो इसके 2 ज़ब्त हैं, शुन्नु और सुन्नु। तो सुन्नु सीन मुहमला के साथ भी है और शीन मुअजमा के साथ, दोनों के माना सेम है। सब्बूहु कलीलन कलीलन, थोड़ा थोड़ा करके मिट्टी डालना। बस सबक पूरा हो गया। मैं अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत मुफ्ती ज़रवली ख़ान साहब की उस दिन क्लिप आई, महरूम हो गए। उन्होंने फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में ये देखा कि मैं कब्र में, मेरा इंतकाल हो गया, मुझे दफन कर दिया गया, मैं कब्र में हूँ। और इतने में एक हसीन जमील शख्स मेरे पास आकर खड़ा हो गया। अभी वो वहीं खड़ा था कि दूसरा शख्स आया जो उससे ज़्यादा हसीन जमील है। उसने उसको कहा तू उधर जा पाँव के पास, और वो मेरे सर के पास खड़ा हो गया। और उसने कहा अभी वो इम्तिहान लेने वाले मुम्तहिन हजरात तशरीफ़ ला रहे हैं। इतने में वो मुनकर नकीर सवाल जवाब करने वाले आ गए। तो ये जो दूसरा शख्स आया था जो पहले से ज़्यादा हसीन था, उसने कहा जाओ तुम्हारी फ़ाइल, और उस पर उसने टिक 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 कर दिया कि जाओ हो गया जवाब। मैंने पूछा तुम कौन हो? तो पहले शख्स ने कहा मैं तुम्हारी फजर की नमाज हूँ। हज़रत मुफ्ती ज़रवली ख़ान साहब फजर की नमाज खुद पढ़ाया करते थे, इत्मीनान से अच्छी क़िरात करते थे। तो मैं तुम्हारी फजर की नमाज हूँ। फिर दूसरे शख्स से पूछा आप कौन? तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारी कुरान की तिलावत हूँ, तुम कुरान बहुत पढ़ते थे। तो कुरान और फजर की नमाज, इन दोनों ने कब्र में हज़रत मुफ्ती ज़रवली साहब की मदद की और उनको महफूज रखा वहाँ पर। तो ये है फजर की नमाज मस्जिद में जाके बाजमात पढ़नी चाहिए, कुरान भी पढ़ते रहना चाहिए। अल्लाह में तौफीक नसीब फरमाए। बाप पूरा हो गया, आगे नेक्स्ट बाप वदाउस साहिब बाद में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ओके, आपकी किताब में कितना सबक हुआ? कितनी सफ़े हुए? 2 सफ़े हुए? जी बस अल्हम्दुलिल्लाह, जाओ भाई।